Start. Good morning. Today I will discuss the topic that is the Classius Clapeyron equation. Before this topic, we have already discussed about the inversion curve, Maxwell relations, and Joule-Thomson coefficient. So, in the Classius Clapeyron equation, this diagram indicates that this one is the pressure, this one is the temperature. When we draw the curve between the pressure and temperature, we have the three phase. One is the solid, another one is the liquid, and third one is the vapor. तो जब भी कोई लिक्विड को अगर हम हीट करते हैं तो उसका फॉर्मेशन तीन तरीके से होता है. लिक्विड है, हीट हम करेंगे स्लोली उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, देन it converts into the form of vapor. और अगर हम टेम्परेचर रिड्यूस करते हैं या we reduce the melting point, then the water is converted into the form of ice. Suppose that the normal temperature of the water is 20 to 25 degrees centigrade according to the atmospheric temperature, but when we reduce its temperature up to the freezing point, it means that below the 0 degree centigrade or 0 degree centigrade, that temperature is known as the ice temperature. So basically, in this curve, there are three forms of curve. This curve is known as Classius Clapeyron equation. Under the curve, this one is the pressure and this one is the temperature. This phase is for solid, this phase is for liquid, and this phase is the vaporization, or you can say that evaporation. So the quality of the steam, there are the three type of steam. One is the wet steam, जहाँ पे moistures के जो particles हैं वो wet होते हैं. Another one is the dry steam, and third one is the superheated steam. अब हम Classius Clapeyron equations को discuss करेंगे according to the use of Maxwell relation. We already discussed about the Maxwell relation. There are the four exact differential equation, mathematical expression. We derive the Maxwell relation. There are the four equations. The four equations of the Maxwell. That is these equations are the Maxwell equations. हमने पहले भी कहा था इस equations को आप लोग लिखने का practice कर लें. कैसे लिखा जाता है Maxwell का relation? TB del T by del V. अगर यहाँ B है तो यहाँ S आएगा, del S, और यहाँ V है तो PB के लिए सॉरी यहाँ P आएगा, क्योंकि हमने कहा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन PB और ST फैक्टर में करेंगे, और यहाँ जो आएगा वो del S आएगा. अब यहाँ S एंट्रोपी तो यहाँ S आएगा, यहाँ B है तो यहाँ B आएगा. अब इसकी सिंबल क्या आ गया, माइनस लगा देंगे क्योंकि मैक्सवेल रिलेशन का जो फर्स्ट है वो नेगेटिव, सेकंड है यहाँ TB हो गया, P होगा del T by del V. अब यहाँ P है तो del V, और यहाँ T है तो यहाँ del S. यहाँ S है तो यहाँ S, यहाँ P है तो यहाँ P. This is the Maxwell equation number 2. This is equation number 1. This equation is number 2. अब हम Maxwell equation number 3 करेंगे. जब हम सेकंड को रिवर्स करेंगे तो थर्ड हो जाएगा del P by del T, that is equal to del S over del V. यहाँ B है तो यहाँ B, यहाँ P है तो यहाँ P. This is equation number 3. और जब हम equation number 4 की बात करेंगे तो this is del V over del T and constant S is equal to del S over del T and constant V minus. यहाँ P है तो यहाँ पे P आएगा, यहाँ P है तो यहाँ पे P आएगा, यहाँ पे B है तो यहाँ P, यहाँ T है तो यहाँ P. तो जनरली उसका हम जो सफिक्स है उसको चेक कर लेते हैं. यहाँ S आएगा तो यहाँ S, यहाँ B है तो B, यहाँ S आएगा तो S, यहाँ P है तो P. This is B, this is T, this is P, and this is T. तो again we recheck. PV is equal to ST. Again PV is equal to ST, then PV is equal to ST, and then PV is equal to ST. So there are the four relations of
the Maxwell. By these equations, we write the general expression for the term of the Classius Clapeyron equation and as well as for the inversion curve. So here that the change of transformation of from liquid to solid, from solid to vapor, there are the three phase transformation. Here this is the pressure line, this one is the temperature line. अब जो भी हम क्लासियस क्लैपेरियन इक्वेशन के इंडिकेट करता है कि द इक्वेशंस दैट अंडरगोस फ्रॉम एंट्रोपी इज द फंक्शन ऑफ टेंपरेचर कॉमा वॉल्यूम। तो अगर एंट्रोपी फंक्शन है टेंपरेचर कॉमा वॉल्यूम को, तो इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं दैट ds इज इक्वल टू del s ओवर del t इनटू dt प्लस del s ओवर del v इनटू dv। यहाँ b है तो यहाँ p, यहाँ d है तो यहाँ t। So this equation, when the function of temperature and volume, then this equation can be written into this form. When there are no change of transformation of the temperature, so we can write here that इस Maxwell relations का जो applications है वो आगे हम यूज करेंगे, तो इसलिए हम इस equations को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे शो हो रहा है, ओके। So this equation ds, suppose that change of transformation, change of temperature, change of temperature dt is equal to 0. So अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें, this is the equation number 1. So from equation 1 dt is equal to 0. dt की वैल्यू यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे, then this equation becomes ds is equal to del s over del t into v dt। dt जैसे ही रखेंगे तो ये सारा का सारा टर्म 0 हो जाएगा, तो हम इसको डायरेक्ट ds is equal to del s over del v, तो ये 0 जैसे रखेंगे ये एलिमिनेट हो जाएगा, del s over del v t d। ये हो गया आपका चेंज ऑफ एंट्रोपी। अब अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल थर्ड रिलेशन, जो कि अभी हमने लिखा है डायरेक्ट एज इक्वेशंस, आप इसको याद कर सकते हैं फ्रॉम मैक्सवेल इक्वेशन नंबर 3, फ्रॉम मैक्सवेल इक्वेशन नंबर 3, दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज del s over del v, del s over del v and t is equal to del p over del t and v। यहाँ v है तो ये v, यहाँ t है, ठीक। तो जब भी हम क्लासियस क्लैपेरियन इक्वेशंस को ड्राइव करेंगे, so let us assume that entropy is the function of temperature comma volume, so ds can be written as del s over del t into dt plus del s over del v into dv। this is equation number 1। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशंस में ये जो इक्वेशन है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ds is equal to del p over del t into v, क्योंकि del s over del v over t into dv, that is equal to del p over del t into v। So from this Maxwell relation we can write this। अब जो del s over del v है, from Maxwell relation 3, del p over del t, that value is equal to del s over del v, यहाँ भी क्या है, इसको हम लिख सकते हैं s f g अपॉन v f g। s f g की वैल्यू जो होगी that is s g minus s f, this value is v
Vg माइनस Vf। SFG को हम लोग क्या लिख सकते हैं, Sg माइनस SF और VFG को Vg माइनस Vf। सो क्योंकि हम जानते हैं SFG इज इक्वल टू HFG अपॉन T। SFG नेट चेंज ऑफ एंट्रोपी या entropy of evaporation that is equal to the enthalpy of evaporation with respect to the temperature. So SFG is equal to HFG upon T. So del P by del T over V is equal to SFG की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर दें HFG by T into VFG. Del P by del T into V is equal to HFG upon T into VFG. So this equation is known as Classius Clapeyron equation। जो इक्वेशन आपकी ये है इसको हम कहेंगे दिस इज द Classius Clapeyron equation। अब बेसिकली जो Classius Clapeyron equation है it is to be derived with the help of this equation because why we put here dt that eliminates here the only the term is del S over del V from the Maxwell relation del S over del V is equal to del P by del T and this is to be derived into the form del P over del T at constant V is equal to HFG upon P into VFG. So this equation is very important. Generally it is asked to be derive the expression for the Classius Clapeyron equation. So we have to know that there are the two curve in between the pressure and temperature, solid phase, liquid phase and vapor phase. This one is the triple point. जहाँ पे तीनों कर्व आपस में मिलते हैं उसको हम कहते हैं triple point. So when we study about the properties of the steam, so in the properties of the steam we discuss about the three types of the steam. One is the wet steam, then superheated steam and then dry saturated steam. These are the types of the steam. So when the water comes into the form of steam, either water comes into the form of ice, so there is the transformation of the field. When all the three liquid, solid and vapor meets at an adjacent point, then this point is known as the triple point. So this is the curve of the Classius Clapeyron equation. Okay. Now the very important topic now we will discuss about the throttling process. जब हम लोगों ने जूल थॉमसन कोएफिशिएंट पढ़ा था तो थ्रॉटलिंग प्रोसेस का वहां पे यूज आया। तो जनरली दिस टॉपिक ऑलवेज बी आस्क्ड इन द इंटरव्यू व्हाट डू यू मीन बाय थ्रॉटलिंग प्रोसेस। तो सबसे पहले थ्रॉटलिंग प्रोसेस जो है उसके लिए अगर हम एक पाइप को कंसीडर करते हैं, इनलेट सेक्शन इसका ये है और एग्जिट सेक्शन इसका ये। इनलेट फिनोमेना और एग्जिट फिनोमेना को यहाँ पे प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर P1 V1 T1, यहाँ पे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर P2 V2 T2। Suppose that when a steam is passes through inlet section and exit section. This is the inlet section and then this one is the exit section. When the fluid is passing through the pipe, then there are the friction occurs in between the surface of the pipe and the fluid which are flowing in the pipe. Suppose that fluid is passing through in this pipe, so there are some frictions in between the surface of the pipe and to the water or steam liquid flow into
दिस पाइप। अगर P1 V1 T1 और एक वर्ड और है दैट इज H1, जिसको हम क्या कहते हैं, दिस वन इज द एंथैल्पी। और यहाँ पे अगर हम H1 की बात करें तो दिस वन इज द एंथैल्पी एट H2। तो इन द थ्रॉटलिंग प्रोसेस अगर हम यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन या कोई वॉल को अटैच कर दें, सपोज दैट अगर कोई वाटर फ्लो हो रहा है, सडनली हम उसके वाटर की वेलोसिटी को रिस्ट्रिक्ट कर दें, मींस इसके आगे कुछ हम बैरियर लगा दें, तो जिस वेलोसिटी से वाटर आ रहा है वो प्रेशर जो है, वेलोसिटी वाटर की जो प्रेशर है वो चेंज हो जाएगा। इट मींस दैट when the water flow inside the pipe, then sudden restriction takes place. There are changes of the pressure due to restriction occurs in this pipe. तो ये देखा गया कि थ्रॉटलिंग प्रोसेस क्या कहता है कि एंथैल्पी before enthalpy before entrance is enthalpy before, इसको हम कह सकते हैं throttling is equal to enthalpy after throttling। बिफोर थ्रॉटलिंग और आफ्टर थ्रॉटलिंग जो एंथैल्पी है वो हमेशा these enthalpies are inlet, the enthalpy is H1 and the enthalpy at exit, these value is equal to the H2. So before inlet and after exit the enthalpy remains same. So enthalpy before throttling that is equal to the enthalpy after throttling. H1 is equal to the H2. So whenever the theory that what do you mean by throttling process generally asked to marks, what do you mean by throttling process? So in the throttling process the enthalpy remains same. Enthalpy before entrance is equal to enthalpy after exit, and there are no change of the enthalpy at entrance and exit, but the change into the pressure at entrance and exit. So this is the enthalpy during throttling process. Another topic is related to the functions. There are two types of a function which already we discussed into the maximum relation. That the two functions, one is the Helmholtz function and another one is the second Gibbs function. गिब्स फंक्शन क्या होता है और हेल्महोल्ट्ज फंक्शन क्या होता है, इस चीज को हम डिस्कस करेंगे क्योंकि ये पूछा जाता है कि राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन द गिब्स फंक्शन एज वेल एज हेल्महोल्ट्ज फंक्शन। तो जनरली हेल्महोल्ट्ज फंक्शन जो कि हमने मैक्सिमम रिलेशन जब ट्राई किया था, देयर आर द फोर रिलेटेड इक्वेशंस। वन इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो कि del Q is equal to del U plus del W था। सेकेंड इज द H is equal to U plus PV। थर्ड जो है दिस इज द हेल्महोल्ट्ज फंक्शन एंड फोर्थ वन इज द गिब्स फंक्शन। तो थर्ड जो है आपका, पहले हम फर्स्ट सेकेंड ऑलरेडी हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और एंथैल्पी को डिस्कस कर चुके हैं। हेल्महोल्ट्ज फंक्शन क्या होता है? हेल्महोल्ट्ज फंक्शन को हम लोग F से इंडिकेट कर सकते हैं। हम पहले भी डेफिनेशंस बता रहे हैं। हेल्महोल्ट्ज फंक्शन F is equal to U minus Ts। U इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर और ये एंट्रोपी है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं dF is equal to du minus Tds minus
SDT, इसको हमने differentiate कर दिया respectively one to another form. So according to the Helmholtz function, according to the Helmholtz function, the total internal energy, either we can say that according to the Helmholtz function, it is the difference between function, it is the difference between internal energy to the product of temperature and entropy, to the product of temperature and entropy. So this function is known as the Helmholtz function. Next is the Gibbs function. So Helmholtz function क्या हो गया? F is equal to u minus ts, df is equal to du minus tts minus sdt. So according to the Helmholtz function, it is the difference between the internal energy and to the product of temperature and entropy. Second, Gibbs function. अब Gibbs function इसकी स्पेलिंग कहाँ से स्टार्ट है? G से. So Gibbs function G is equal to h minus ts. So this is the formula of the Gibbs function. तो Gibbs function को हम क्या कह सकते हैं? It is the difference between the enthalpy to the product of temperature and entropy, that is called as the Gibbs function. अगर हम इसको डिफरेंशिएशन फॉर्म में लें, so dg is equal to dh minus tds minus sdt, इसको हम लिख सकते हैं. अब ये जो फंक्शन हुआ वो dg के टर्म में हुआ. So according to this equation, Gibbs equation is defined as it is the difference between change of enthalpy to the product of, it is defined as the difference between change of enthalpy to the product of temperature and entropy. So this is known as the Gibbs function.